Good morning student. In our previous class we finished up to the chapter number 3rd and today we start chapter 6 square and square root. Your chapter 4th is practical geometry. In this chapter we will learn how to construct a quadrilateral on the basis of 5 measure. In this 5 measure, like in 7th standard, you learned how to construct a triangle. How to construct a triangle on the basis of the side, on the basis of the side, on the basis of the angle, side angle, and on the basis of the right angle, hypotenuse, and one of the side. It is base or either perpendicular. On the basis of these, you constructed a triangle. And in this class, in chapter 4, practical geometry, we will learn how to construct a quadrilateral on the basis of the four side and one diagonal, 3 sides and 2 diagonal, 2 adjacent side and 3 angles. So in this way, by angle, side and diagonal, we will construct a quadrilateral. We will learn how to construct a quadrilateral by using the 5 measures. And in chapter 5, data handling, we will learn in this chapter grouping data, organizing data, grouping of data, organizing of data, and we will learn about the different type of graph like pictograph, bar graph, double bar graph, histogram, and circle graph, or we can say pie chart, and in last, in this chapter we will learn about the probability. What we learn about the probability? But these 2 chapters we will learn later. First we study chapter number 6 and chapter number 7. Chapter 6th is square and square root, and chapter 7th is cube and cube root. After this we will learn chapter 4 understanding quadrilateral and chapter 5th data handling. Now we will start chapter 6 square and square root. Square means power of 2. Square means power of 2, and square root is represented by that is the square root, or we write 2. That is the square root. Square root is the inverse operation of the square. Square root is the inverse operation of the square, and power of 2, that means multiplication of the same number. Like we need to find out the square of 3, so that means multiplication of 3 into 3. So we get 9, and the square root is the inverse operation of the square. So to find out the square root, we just prepare the pairs, like 3 into 3 is 9. So here the square root of the 9 is 3. Square root is the inverse operation of the square. Here we see the square of the number from 1 to 10. Square of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Here we see square of the 1 is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100. So after seeing the square from number 1 to 10, we conclude the square of any number. The square of any number is end on 1, 4, 1, 4,
5 6 1 4 5 6 9 1 4 9 5 and 6. So the square of any number is end up to the, or we can say the unit place of the square of any number is maybe 1 or 4 or 5 or 6 or 9 or 0. The square of any number end on even number of 0. यदि 0 भी आते हैं तो किस में आएंगे वो? even number में, that is 20 और मे बी 40 और मे बी नंबर. यहाँ पे अपन ने यूनिट प्लेस को चेक किया. यूनिट प्लेस क्या होगी? किसी भी नंबर की जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी? 1 4 5 6 9 0. और कोई नंबर है जैसे 10 है जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0. यदि इसका स्क्वायर करोगे तो जो 0 पे आएंगे तो हमेशा किसी भी 0 वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कितने 0 आएंगे? 2 या फिर 4 या फिर 6. मतलब इवन नंबर में क्या आएंगे? जीरोस. जीरोस आर कमिंग इन इवन नंबर. Square of 100, that is 10,000. So here we see there are 4 0. In this chapter we will learn about the different method of finding square and square root. One is the simple way is multiplying of that number into 2 times. Like to find out the square of 4, so we see 4 into 4. Or they ask to find out the square of 12, so we just multiply 12 into 12. The another way of finding the square is by using the algebraic identity. That is, like we see a plus b का whole square, that is a square plus 2ab plus v square. So by using this identity we will find out the square of any 2-digit number or 3-digit number. देखिए यहाँ पे जैसे 12 का स्क्वायर, that means स्क्वायर ऑफ 10 plus 2. स्क्वायर ऑफ 10 plus 2. 12 हो गया, 10 plus 2 is 12. So here we see a is equal to 10 and v is equal to 2. Now replacing the a and v of the identity by 10 and 2. So we see 10 plus 2 का square, that is a square, that means square of 10 plus 2 into a, that is 10 into v, that is 2 plus square of v, that is square of 2. So what we see, square of 10 is 100, 2 to the 4, 4 10 ja 40, or we see 10 to the 20, 20 to the 40, and square of 2 is 4. And when we add, so we get 144. Here also we see 12 to the 24 का 4 2 carry, 12 1 जा 12 और 2 14, so we get 144. In both the cases the product remains same or the square remains same. Now we see the different method of finding square root. Different method of finding square root. Square root को find out करने के जो अलग अलग मेथड है, that is first one is factorization method. Through factorization. One more method is here, repeated subtraction. Here we repeat the subtraction of the odd number. First we subtract 1, then 3, then 5, then 7, then 9. Repeated subtraction. Subtraction of the odd number. Third one is division method. Third one is division method. You all know about the factorization method, how we find out the factor of any number or we find out the prime factor of any number. In repeated subtraction we will repeat the subtraction of the odd number, 1, then 3, then 5, then 7, and at the we get 0. If we get the difference is 0, then by subtracting or we repeat it, जितनी टाइम अपन ने रिपीट किया है उसको, तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, उसका स्क्वायर. एक्सरसाइज में अपन इसको भी देखेंगे. नाउ आफ्टर दिस
repeated subtraction, division method. In division method we will form the pair from the last. This is our division method, and after the division method one more method is estimating. लगभग अपन जो फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट मे बी द, क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169. तो वन मोर मेथड इज बाय एस्टिमेटिंग मेथड. 9 किस में आता है, तो 3 में आता है, और एक आता अपना 7 में, तो 13 भी हो सकता है एंड 17 भी हो सकता है. तो ऐसे में अपन एस्टिमेटिंग मेथड से भी वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. Now see the first exercise of the chapter, exercise 6.1, and the first question of the exercise is what will be the unit digit of the square of the following number. दिए गए नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे उसकी वंस डिजिट क्या होगी, सिर्फ अपन को वो बस बतानी है. दे नॉट आस्क टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इसमें आपको नंबर का स्क्वायर नहीं बताना, 81 का आपको स्क्वायर नहीं बताना, 799 का आपको स्क्वायर नहीं बताना. यू जस्ट फाइंड आउट what will be the unit place after square of the 799. 799 का स्क्वायर करने पर उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होगी वो सिर्फ बतानी है. तो यहाँ पे यदि अपन देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 81. सो द यूनिट डिजिट ऑफ द 81 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1. यूनिट डिजिट क्या है 81 की, 1 यूनिट डिजिट, और वी कैन से वंस प्लेस डिजिट. यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 81 इज 1. सो स्क्वायर ऑफ 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, और वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो सिंस द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. आइदर वी कैन राइट इन दिस वे और वी कैन राइट in this way here. So square of 1 is 1, hence the unit digit of the square of, hence the unit digit of the square of 81 is 1. स्क्वायर ऑफ द 81 का स्क्वायर करने पर उसकी वंस डिजिट क्या होगी, तो 1 का अपन ने स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1. सो वी गेट 1 एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81. नाउ वी सी द सेकंड वन 272. सो द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 272 is 2. The unit digit of number 272 is 2. The square of, so the square of 2 is 4, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता 4. Hence the unit digit of the square of 272 is 4. क्या होगी 272 के स्क्वायर की जो डिजिट होगी डेट इज 4. सेम वे यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट digit of the square of the 799. Square of 9 is 81. Square of 9 is 81. So answer is 1. यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16. सो आंसर इज 6. 7 का स्क्वायर होगा 49. सो आंसर इज 9. स्क्वायर होगा 8 का 64. सो योर आंसर इज 4. यहाँ पे 0 का जब स्क्वायर करोगे आपके 2 0 आएंगे और आंसर इज 0. 6 का स्क्वायर करोगे सो वी गेट 36. so your answer is 6 and the square of 5 is 25. so your answer is 5. The unit digit of the number is 5. They just ask to find out the unit digit of the square of the following number. They don't ask to find out the square of the following
number. Now let's see question number second. In this question they say the following numbers are obviously not perfect square. ये जो नंबर दिए गए हैं ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है. आपको रीजन पूछा गया है. दे आस्क व्हाई these all numbers are not the perfect square. So first we discuss the unit digit of any perfect square number is 1, 4, 5, 6, 9 and 0. The unit digit of any perfect square number is either 1 or 4 or 5 or 6 or 9 and 0. अपन ने देखा था 1 का स्क्वायर डेट इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 डेट इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 डेट इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 डेट इज 16. So 6 square of 5 is 25. Then these digits are repeated. So 1, 4, 9, 1, 4, 9, 6 and 5. And the square of 10 is 100. So we say 0. So we can say the unit digit in this question we just write one line. अपन को सिर्फ एक लाइन लिखनी है इन सारे क्वेश्चन में. The unit place digit of perfect square number contains 0, 1, 4, 5, 6 और 9. क्या आएंगी 0, 1, 4, 5, 6 और 9. जी जो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे. यहाँ पे अपन देखें यहाँ पे क्या है 7. क्या है 7. जी डिजिट्स होंगी और साथ में क्या होगा और इवन नंबर ऑफ 0. जो 0 होंगे वो कैसे होंगे इवन नंबर में. इवन नंबर ऑफ 0 किस में होंगे इवन नंबर में लाइक 2, 4, 6, 8. सो हेंस here we see hence 1057 hence 1057 is not a perfect square ये क्या नहीं है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. why is not a perfect square of any number because its unit digit is 7. because its unit place digit is 7. जो इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट है वो क्या है 7. यदि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होती तो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था. लेकिन 7 किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे नहीं आता. वैसे ही यहाँ पे 3 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आएगा. यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बिकॉज देयर इज ऑड नंबर ऑफ 0. यहाँ पे जो 0 है वो क्या है ऑड नंबर में और क्या होने चाहिए थे इवन नंबर में. यहाँ 2 भी नहीं आता, यहाँ पे ऑड नंबर में 0 है, यहाँ पर भी किस में है ऑड नंबर में 0 है. सो वी जस्ट राइट दी सेम लाइन एंड इन रीजन वी जस्ट राइट इट्स यूनिट प्लेस इज 7, इट्स यूनिट प्लेस इज 3, इट्स यूनिट प्लेस इज 8, इट्स यूनिट प्लेस इज 2, इट्स यूनिट प्लेस. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 0 है बट इन दिस वी राइट देयर आर ऑड नंबर ऑफ 0 बिकॉज देयर आर ऑड नंबर ऑफ 0. यहाँ पे जो 0 है वो किस में है ऑड नंबर्स ऑफ 0. जो 0 है वो किस में है ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर ऑफ 0. That's why these 3, 1, 2, 3 are not a perfect square of any number.
So remaining question you will do like this. First you write this line and after this you will write hands and write the number. So you all are try same way to complete the question number first and second of the exercise, and in our next class I will try to complete this exercise. So hopefully you all are understand what we discussed today. Thank you and have a nice day.